to help improve the speed and security of its record keeping. One industry in particular that stands to benefit enormously is the healthcare industry. Currently, the world's healthcare computer systems hold hundreds of millions of patient medical records. Despite the fact that these healthcare organizations have invested huge sums of money on security, still, the current access and storage methods are far more vulnerable to cyber attacks compared to the blockchain-based technology. Blockchain technology could allow the entire databases of personal health records to be kept secure. An added bonus is that the technology also facilitates the use of private key. That means only certain individuals can gain access. Some of the other blockchain smart contract use cases include their use in issuing prescriptions, storing receipts, general stock management, storing test results, and so on. Property ownership. Smart contracts have two huge uses when it comes to the property market. First, they can be used to record property ownership. Since the use of smart contracts is faster and more cost-efficient, this makes them a much better alternative to existing systems. It also means that they can be used to record the ownership of all types of property from buildings, lands, to phones and watches. Number 2, elimination of any kind of middleman. Within the housing market, smart contracts can remove the need for expensive services such as those provided by lawyers and housing brokers. This new technology also means that for the very first time, sellers have the ability to handle transactions completely by themselves without the need of any middlemen. Mortgages. The property market also stands to benefit from cheaper, faster and more secure smart contract-based mortgage transactions. Not only will this allow buyers to get into the property quicker, but it will also help to make the entire process a little less of a headache. Smart contract mortgages would allow both the parties to digitally agree to the sale before processing the payment. Once this is done, the contract would update the property ownership details to reflect the change of ownership. Since the process would require unique key code authorization on behalf of the original owner, it will make the whole process more secure and reduce instances of fraud. Insurance. The next sector that stands to benefit from smart contracts is the insurance sector. The insurance industry spends tens of millions of dollars each year on processing claims. Not only that, it actually loses millions of dollars to fraudulent claims as well. Aside from supporting the initial insurance policy, smart contracts could also help to improve the process of claim processing in many ways. They could allow error checks and determine payout amounts based on the set of criteria that takes into account the kind of policy that was held by the individual or the organization. Once again, reduced processing times, a dramatic reduction in errors, and cheaper costs are among the main benefits of smart contracts. In longer term, smart contracts could be used in tandem with Internet of Things enabled vehicles to allow for the pay-as-you-go insurance policies and the immediate activation of claims after an accident. Information such as driver licenses, driving records, accident reports, and policy details could be immediately processed to facilitate speedy payouts that would benefit both the parties. Medical research. The medical research industry will benefit from similar advantages as the healthcare industry. First of all, highly sensitive data such as patients' records could be transferred between departments, research centers, after having been securely encrypted via blockchain technology. Since many of the patients participating in medical research have sensitive medical conditions that they often wish to remain private, keeping these records secure is very essential. Likewise, medical research companies have enormous amount of data which includes
test results, and new drug formulas that they need to keep safe. This could be secured with the use of smart contracts, should they need to divulge any of this information to a third party for any reason. Voting. Well, smart contracts can be the smart formula that can be used for elections. Allegations of fraudulent activities have occurred in many elections of the past. Despite using computer systems that in some cases cost millions of dollars, fraudsters find increasingly imaginative ways to manipulate them. Well, here comes smart contract as a smart savior. Smart contracts are a simple and cost-effective solution to this problem. They can be used to validate a voter's identity and record their vote. This information could then be used to initiate an action after all voting had ceased. Since the blocks within a blockchain are impossible to alter once they have been recorded, manipulation of this record would be very difficult. Peer-to-peer transactions. Smart contracts can be used for a whole range of peer-to-peer transactions. This reasoning is what led to the creation of the Ethereum project and other such companies. Users of all shapes and sizes could use these platforms to create and agree on smart contracts. These contracts then remain active until a set of agreed conditions are met. Once the smart contract is happy that all the conditions have been met, it then allows the remaining portion of the agreement to be fulfilled. Typically, this is the transfer of money, but this isn't always the case. So far, smart contracts have been used for everything from launching ICOs to selling goods on the internet. Various companies are also using smart contracts to secure services of development teams and other outsourced companies. The possibilities of peer-to-peer smart contracts are literally endless. Theoretically, this could replace many of the existing roles that are currently fulfilled by currency. Product development. Another exciting use of smart contracts is to keep a ledger regarding the stages of development of a product. A huge part of the appeal of smart contracts is their ability to keep information secure and to prove its origins. A company that has invested huge amounts of money into developing a project obviously doesn't wish for the information to be stolen. Generally, the only route to justice when information is stolen is a lengthy court process, something which most companies don't have time and money to go through. Now, when it comes to intellectual property such as ideas, you don't need to look as far as the never-ending patent claims between Apple and Samsung just to see how important being able to prove ownership really can be. The list of industries that could benefit from this new technology is huge. Given the fact that smart contracts support and secure product development, the kind of industries involved could range from a small startup to a large tech company such as Microsoft or Amazon. Stock taking. Supply chains are another area of business that can benefit from blockchain-based smart contracts. Internet of Things devices could be used throughout the supply chain to record each step a product takes. Smart contract supply chains could theoretically, virtually eliminate in-house theft, as managers would be able to trace a missing product back to the exact time and place that it went missing. On huge supply chains, such as those found in large warehouses, these smart contracts would enable managers to see real-time stock levels and the time it takes for a product to move through the supply chain. Managers could use this data to adjust stock levels and develop new working practices to improve delivery times. For supply chains that operate in several different locations or companies, smart contracts could do all of the above and even initiate automating reorders and payments for order already received. Such information as contained in these contracts could also be used to help with determining up and coming busy periods and even which products to stock at different times of the year.
So we see smart contracts are the most exciting thing to have come from the blockchain technology so far. Smart contracts really do have the power to take our lives out of the hands of institutions such as banks. Since we can use smart contracts to exchange something as simple as labor or more complex things such as loans, they will gain in popularity and the number of these services will grow exponentially. The technological advantages of smart contracts will help to speed up transaction times, lower costs, and even make processes much easier and stress-free. And when smart technology is present in the cars we drive, things we use, and help determine the choices that we make, the world could be a much more secure and a happy place to live. For all this interesting content from around the world of digital currencies and blockchain technology, keep watching your favorite channel, Crypto TV. Like, comment, share, and subscribe. I'm Vinita Chatterjee, signing off. आज हमारे साथ जुड़े हैं स्पेशल गेस्ट जो भारत के एक जाने माने क्रिप्टो टैक्स एक्सपर्ट में से एक है, मिस्टर गौरव मेहता। भारत सरकार ने 30% टैक्सेस जो लागू किए हैं, तो सरकार क्रिप्टो करेंसी को गैम्बलिंग के रूप में देख रही है क्या? अगर हम इक्विटीज मार्केट या तो रेगुलेटेड मार्केट में जाते हैं तो वहां भी 20-30% टैक्स स्लैब है। गवर्नमेंट इसे अनरेगुलेटेड फाइनेंशियल मार्केट की तरह देख रही है जिसमें अप टू 30% टैक्सेस पॉसिबल है, तो उन्होंने आज के डेट में 30% टैक्सेस लगाए। रईस फिल्म में शाहरुख का वो फेमस डायलॉग तो आपको याद ही होगा। अम्मी जान कहती थी कोई धंधा छोटा नहीं होता और धंधे से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। वेल, एनएफटी के कुछ दीवानों ने इस डायलॉग को कुछ ज्यादा ही सीरियसली ले लिया और एब्सोल्युटली क्रेजी और वियर्ड एनएफटीज का बिजनेस स्टार्ट कर दिया। Hi, I'm Ruchi Sharma and I'm back with a list of crazy, weird, bizarre, outlandish, completely mad NFTs for you. अब आप कहेंगे रुचि यार तुम हर बार NFTs की ही बात क्यों करती हो? तो इसलिए क्योंकि I can talk NFTs, I can walk NFTs, I can eat NFT, I can drink NFT and when I sleep, I dream about NFTs. ये NFTs का चस्का ही कुछ ऐसा है यार। लेकिन NFT के लिए मेरा चस्का इज नथिंग कंपेयर टू द फॉलोइंग 3 NFT ओनर्स एंड क्रिएटर्स। इन तीनों ने तो क्रेजी बनने की हदें ही पार कर दी हैं। जानना चाहते हैं? तो लेट्स गेट स्टार्टेड। क्रेजी NFTs की लिस्ट में सबसे ऊपर है सेल योर सोल NFT। नहीं, आपके कान नहीं बज रहे, आपने बिल्कुल ठीक सुना। अब NFTs पर आत्माओं का डेरा हो गया है। पता नहीं कब किस क्लिक के साथ किसकी आत्मा NFT आपको पोजेस कर ले। वेल, एज यू नो, आई एम अ बिट फिल्मी, तो थोड़ा ड्रामा तो बनता है, बट डोंट वरी, इस आत्मा की NFT का हॉरर से कोई लेना देना नहीं है। तो हुआ कुछ ऐसे कि 21 साल के स्टीजन वैन नाम के डच स्टूडेंट के दिलो दिमाग पर NFT का ऐसा भूत सवार हुआ कि उसने पॉलीगॉन पर अपनी सोल यानी आत्मा की ही NFT मिंट कर डाली। इतना ही नहीं, बंदे ने वर्ल्ड की बिगेस्ट NFT मार्केट प्लेस OpenSea पे अपनी आत्मा की NFT को लिस्ट भी कर दिया। अरे कोई जाकर इस डच स्टूडेंट से पूछे कि भैया तुम्हारी 7 पुश्तों में भी किसी ने आत्मा को देखा है? लेकिन ये पागलपन यही खत्म हो जाता तो भी कोई बात थी, लेकिन ना, शेर को सवा शेर मिल गया और किसी बेहद समझदार इंसान ने इस डच स्टूडेंट की आत्मा की NFT को 300 यूरोज यानी करीब 25,000 रुपए में खरीद लिया। क्या क्या क्या? मेरा भी बिल्कुल ठीक ऐसा ही रिएक्शन था। इस डच स्टूडेंट की सोल वर्ल्ड की फर्स्ट ह्यूमन सोल यानी आत्मा है जिसे बतौर NFT बेचा गया है। इसीलिए जनाब ने रीसेंट इंटरव्यू में अपनी आत्मा की NFT की मार्केट वैल्यू अराउंड $3.5 मिलियन यानी तकरीबन 27 करोड़ रुपए बताई है। अब इन्होंने अपनी सोल की NFT की इतनी क्रेजी वैल्यूएशन क्या सोच कर रखी है, इसका जवाब तो शायद बेचारे की आत्मा को भी नहीं पता होगा।
और सुनिए, अपनी आत्मा की एनएफटी के साथ इस डच स्टूडेंट ने सेल ऑफ सोल एग्रीमेंट भी अटैच किया है, जिसमें डिटेल में डिस्क्राइब किया गया है कि कैसे ओनर उसकी सोल को यूज, रीसेल या फिर किसी डेटी को सैक्रिफाइस यानी कि बलि चढ़ा सकता है। वाओ, इट सडनली टुक अ वेरी डार्क टर्न, है ना? अगर आपको दुनिया का पहला सेल ऑफ सोल एग्रीमेंट पढ़ना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, गो अहेड। फिलहाल तो मेरा दिमाग क्वेश्चंस के साथ एक्सप्लोड हो रहा है कि आफ्टर ऑल सोल की ओनरशिप कैसे मिलेगी, सोल को यूज, रीसेल और आत्मा की बलि कैसे दी जाएगी। फिल्मों में तो हमने देखा है कि सोल इज लाइक थिन एयर, बिल्कुल आर पार। खैर, दीवानों की बातें दीवाने समझे। अब बात सेकंड क्रेजी एनएफटी और उसके अतरंगी क्रिएटर की, जिन्हें कहा जाता है बॉडी हॉरर फिल्मों का मास्टर। पिछले 50 सालों में वर्ल्ड सिनेमा के वन ऑफ द बेस्ट क्रिएटिव माइंड, द फ्लाई, डेड रिंगर्स, हिस्ट्री ऑफ वायलेंस और अपकमिंग विगो मॉर्टेंसन स्टारर फिल्म क्राइम्स ऑफ द फ्यूचर के डायरेक्टर मिस्टर डेविड क्रोननबर्ग, जो आजकल अपनी फिल्मों के लिए नहीं पर रियल लाइफ बॉडी हॉरर टाइप एनएफटी के लिए सुर्खियों में है। इनके एनएफटीज का नाम है इनर ब्यूटी कलेक्शन ऑफ किडनी स्टोन्स। याक, अनफॉर्चुनेटली जैसा नाम वैसी एनएफटी। डायरेक्टर साहब को पता नहीं अपने किडनी स्टोन में क्या इनर ब्यूटी दिख गई कि उन्होंने अपनी पथरी की फोटो की एनएफटी बना दी। सुपर रेयर नाम की क्रिप्टो आर्ट मार्केट प्लेस पर 28 मार्च 2022 को किडनी स्टोन के फोटो की एनएफटी रिलीज भी कर दी। भला किडनी स्टोन भी कोई दुनिया को दिखाकर बेचने वाली चीज है, पर लोग एनएफटी बनाकर बेच रहे हैं और हैं कुछ नमूने जो उसे परचेज भी कर रहे हैं। इयो। वैसे क्रोननबर्ग ने इस साल से पहले सितंबर 2021 में द डेथ ऑफ डेविड क्रोननबर्ग नाम की शॉर्ट फिल्म को एनएफटी बनाकर नॉन फंजिबल टोकन की दुनिया में डेब्यू किया था। ये 1 मिनट की शॉर्ट फिल्म भी काफी वियर्ड थी, जिसमें डेविड अपनी डेड बॉडी को देखते हैं, फिर अपनी डेड बॉडी से चादर खींचकर बगल में सो जाते हैं। अब इस वियर्ड आर्ट के मतलब का क्या सर पैर निकाले, लेकिन किसी ने इस एनएफटी को $90,000 यानी अराउंड 69 लाख में परचेज किया था। भाई, ये सुपर रिच और सुपर क्रिएटिव लोगों को समझना हमारी समझ से तो बिल्कुल परे है। 1 मिनट की शॉर्ट फिल्म में 69 लाख रुपए उड़ा दिए। पता नहीं इनकी किडनी स्टोन्स की एनएफटी कितने में बिकेगी। इसे भी कोई खरीद ही लेगा जिसकी अकल पर पत्थर पड़े होंगे। खैर, ये किडनी स्टोन एट द एंड ऑफ द डे रियल तो है, लेकिन हमारी नेक्स्ट एनएफटी एक ऐसे रॉक के बारे में है जो रियलिटी में एग्जिस्ट ही नहीं करता। फिर भी एक क्रेजी एनएफटी लवर ने इस वर्चुअल रॉक की एनएफटी के लिए पे किए हैं $1.3 मिलियन, यानी अराउंड 10 करोड़ रुपए। मुझे क्यों नहीं मिलते ऐसे रईस जो 100-200 करोड़ मुझे किसी एनएफटी के लिए ऐसे ही हंसते हंसते दे दे। आफ्टर ऑल मेरे गार्डन में भी बहुत से पत्थर है। एनीवेज, इस एनएफटी का नाम है क्लिप आर्ट ऑफ एथर रॉक। दरअसल ये कार्टून रॉक्स की जेपेग इमेज दुनिया में सिर्फ 100 है, जिसे 2017 में क्रिप्टो पंक्स के बाद एज ए इथेरियम ब्लॉकचेन कलेक्टिबल एनएफटी लॉन्च किया गया था। अपार्ट फ्रॉम बाइंग, कलेक्टिंग एंड सेलिंग, इसकी कोई रियल वर्ल्ड वैल्यू नहीं है, लेकिन इसे ट्रॉन ब्लॉकचेन और क्रिप्टो करेंसी के फाउंडर जस्टिन सन ने सिर्फ अपना कॉलर टाइट करके इंप्रेशन झाड़ने के लिए खरीदा है। भाई, वड्डे लोग वड्डी बातें वर्चुअल पत्थर की फोटोग्राफ को करोड़ों में खरीद रहे हैं। हमें तो किचन में नया मार्बल लगवाना हो तो 10 बार सोचना पड़ता है। Well, that's all in my list of wacky NFTs for now. ऐसी ही अतरंगी NFT की एक और नई क्रेजी लिस्ट के साथ मैं रुचि शर्मा आपसे फिर मिलूंगी। तब तक के लिए कीप वॉचिंग क्रिप्टो टीवी। हाय फ्रेंड्स, मी वैभवी सावंत स्वागत करते तुमचं क्रिप्टो टीव्ही मध्ये।
क्रिप्टो ॲसेट नेमकं काय आहे? आपण जर पाहिलात तर सर्वांचे वेगवेगळे छंद असतात, तर काही लोकांना वेगवेगळे गोष्टीमध्ये इंटरेस्ट असतो. पण एक अशी वस्तू आहे जी आपल्या सर्वांना आपल्या बोटांवर नाचवत असते आणि ज्यामध्ये सर्वांचा एकसारखा इंटरेस्ट आहे, आणि तो आहे फक्त पैसा आणि पैसाच. म्हणून म्हणतात ना, ना बाप बडा ना भैया, सबसे बडा रुपया. एनिवेज, आपण हे नोटीस केलंच असेल की हल्ली अगदी प्रत्येक ठिकाणी फक्त क्रिप्टोकरन्सीची चर्चा आहे. अगदी प्रत्येकाला त्याविषयी जाणून घ्यायचं आहे, त्यामध्ये इन्व्हेस्ट सुद्धा करायचं आहे. परंतु कोणीही दिलेल्या सल्ल्यानुसार क्रिप्टोमध्ये इन्व्हेस्ट न करता तुम्ही स्वतः अगोदर क्रिप्टोविषयी अगदी बारकाईने अभ्यास करा आणि त्यानंतरच नीट विचार करून क्रिप्टोमध्ये इन्व्हेस्ट करा. त्यासाठीच आम्ही कोणत्या ना कोणत्या विषयावर तुमचे नॉलेज वाढवण्याचा प्रयत्न करत असतो आणि त्यासाठीच आज आम्ही क्रिप्टो ॲसेट या विषयाबद्दल आपल्याला डिटेल्समध्ये माहिती देणार आहोत. चला तर मग स्टार्ट करूया. तुम्हाला माहित आहे का की क्रिप्टो ॲसेट म्हणजे नेमकं काय? नाही? नो प्रॉब्लेम. मागील 5 वर्षांमध्ये इंडियन क्रिप्टो ॲसेट इंडस्ट्रीने आश्चर्यजनक प्रगती केली आहे. इंडियामध्ये सध्या 15 मिलियन क्रिप्टो ॲसेट होल्डर्स आहेत आणि त्यांच्या ॲसेट होल्डिंगमध्ये अंदाजे 6.6 मिलियन रुपीज आहेत. तुम्हाला हे जाणून आश्चर्य वाटेल की या काही वर्षांमध्ये भारतात आता 2 क्रिप्टो युनिकॉर्न्स आहेत. अहो, ते युनिकॉर्न्स नाही, म्हणजे क्रिप्टोच्या जायंट कंपनीज जे व्हेंचर कॅपिटलिस्टच्या नुसार $1 बिलियन पेक्षा जास्तची व्हॅल्यू ठेवते. एवढंच नाही तर भारतामध्ये 350 क्रिप्टो स्टार्टअप सुद्धा आहेत, ज्याचा सरळ अर्थ असा आहे की क्रिप्टो ग्लोबलीच नाही तर भारतात सुद्धा धूम करतो आहे. ग्रेट ना? तर आपण बोलत होतो क्रिप्टो ॲसेट विषयी. क्रिप्टो ॲसेटला जर आपल्या साध्या सोप्या भाषेत समजवायचं असेल तर क्रिप्टो ॲसेट ते डिजिटल ॲसेट असतात जे ब्लॉकचेन टेक्नॉलॉजीच्या किंवा क्रिप्टोग्राफीचा वापर करतात. क्रिप्टो ॲसेटला अजून चांगल्या पद्धतीनं जाणून घ्यायचं असेल तर आपल्याला क्रिप्टो ॲसेटचे वेगवेगळे टाइप्स जाणून घ्यावे लागतील. तर क्रिप्टो ॲसेटचे 6 टाइप्स आहेत. पहिले म्हणजे स्टेबल कॉइन, दुसरे CBDC, तिसरे प्रायव्हसी कॉइन्स, चौथे म्हणजे गव्हर्नन्स टोकन्स, पाचवे युटिलिटी टोकन्स आणि सहावे म्हणजेच नॉन फंजिबल टोकन्स. स्टेबल कॉइन अशी डिजिटल करन्सी असते जे फिएट करन्सी जसे की डॉलर इत्यादी किंवा कोणत्याही अंडरलाईंग ॲसेट सारखी जसे की गोल्ड वगैरे याप्रमाणे असते. फॉर एक्झाम्पल, एक एक्स डिजिटल करन्सी आहे आणि डॉलर्सने समर्थित आहे. म्हणजे जसजसे डॉलरची व्हॅल्यू वाढणार तसतसे या एक्स स्टेबल कॉइनची व्हॅल्यू सुद्धा वाढणार किंवा कमी होणार. CBDC म्हणजेच सेंट्रल बँक डिजिटल करन्सी. ज्याप्रमाणे याच्या नावातच त्याचा अर्थ लपला आहे, ही सेंट्रल बँकची डिजिटल करन्सी आहे. CBDC हे कोणत्याही देशाच्या ऑफिशियल करन्सीचा डिजिटल टोकन असतो. नॉन फंजिबल टोकन्स. नॉन फंजिबल टोकन्स हे कोणत्याही प्रकाराचे युनिक आर्ट असू शकतात. उदाहरणार्थ, कोणत्याही फोटोज, पेंटिंग्स, ऑडिओ, कोणते ॲनिमेशन, गेम एक्सेट्रा ज्याला बाय किंवा सेल करता येऊ शकते. परंतु येथे ट्रान्झॅक्शन हे कोणत्या ना कोणत्या तरी क्रिप्टो करन्सीमध्ये होते. आतापर्यंत आपल्याला समजलं असेल की क्रिप्टो ॲसेट नेमकं काय आहे. आता याचे फायदे काय आहेत हे आपण जाणून घेणार आहोत. क्रिप्टो ॲसेट हे डबल स्पेंडिंगच्या प्रॉब्लेम्सला सॉल्व्ह करतं. असे प्रॉब्लेम्स नेहमी अनएन्क्रिप्टेड डिजिटल ॲसेट म्हणजेच डिजिटल मनी पासून क्रिएट होत असतात. कारण डिजिटल मनी सोबत फॉल्स ट्रान्झॅक्शन्स आणि रेकॉर्ड्स बनवणं अगदी सोपं आहे, कारण हे इझिली रेप्लिकेबल आहे आणि ह्याची हिस्ट्री ऑफ ओरिजिनला ट्रॅक करणं हे खूप कठीण आहे. तर दुसरीकडे क्रिप्टो ॲसेटचे सर्व ट्रान्झॅक्शनचे रेकॉर्ड्स हे ब्लॉकचेनवर अपडेट आणि व्हेरीफाय होत असतात. कारण ब्लॉकचेन एक डिस्ट्रीब्युटेड लेजर आहे, म्हणून या डिजिटल ॲसेटला अगदी प्रत्येक जण ट्रॅक करू शकतात. मला विश्वास आहे की क्रिप्टो ॲसेटला घेऊन आपले सारे डाऊट्स क्लिअर झाले असतील. आपल्या नेक्स्ट सेगमेंटमध्ये
मी आपल्याला सांगणार आहे क्रिप्टो ॲसेट मार्केटमध्ये कोण कोण ॲक्टर्स आहेत आणि क्रिप्टो ॲसेट ट्रान्झॅक्शनमध्ये पार्टिसिपेट कोण कोण आहेत. तुर्तास मी वैभवी सावंत इथेच थांबते. पाहत रहा क्रिप्टो टीव्ही. चलिए आज ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये व्हाइट पेपर है क्या भला. दरअसल व्हाइट पेपर किसी भी क्रिप्टो प्रोजेक्ट की एक समरी होती है. व्हाइट पेपर कितनी तरह के होते हैं और उनका सिग्निफिकेंस क्या होता है. व्हाइट पेपर अपने नाम की तरह सिर्फ व्हाइट नहीं होते बल्कि कई अलग अलग कलर्स में आते हैं व्हाइट पेपर. Find out how disruptive blockchain technology is reshaping the world. We will keep you connected to the evolving world of NFT. For accurate and latest updates of cryptocurrency markets and global regulations. Metaverse and Web3 3.0 TV covers the latest crypto crimes. keeps you updated about the global crypto events and exhibitions. Good evening, ladies and gentlemen. Welcome back to Crazy Coins by Kunal. Today's coin is Solana. I'm gonna tell you conversations around it that go like Solana, Solana. It's like the real deal, that breakup back. I'm gonna put some racks to build it with stacks, because I know the stats and the hodlers say I'm a holder Solana till me in my soul. Damn, this is crazy. Highlight is it has gone up over 4,500%. It is the Ethereum killer, founded by the guys who worked on Ethereum. It solves the speed problem and it's like a tornado. If Ethereum is proof of work, this is proof of history, and already on the top market capitalization after Bitcoin and Ethereum. It is the favorite app for all DeFi app developers, but now has gained huge attention from NFT developers as well, which now makes it the only L1 technology that allows DeFi and NFT and blockchain integration services, that too at high speeds with minuscule cost, which is huge. However, most of the time Solana is known for having a congested network because everyone has jumped onto it. So the real question is, with saving costs and tornado speed, faster validation, no mining, will Solana be the Ethereum killer? Until then, stay tuned till I bring you more Crazy Coins by Kunal.
नमस्कार, मी वैभवी सावंत स्वागत करते तुमचं क्रिप्टो टीव्ही मध्ये. मेटावर्सच्या या जादुई दुनियेत कोणी डेटिंग करत आहे, तर कोणी गेमिंग, कोणी शो करत आहे, तर कोणी मूवी रिलीज करत आहे. पण तुमच्या विचारांच्या परे मेटावर्सच्या या रोमांचाने भरलेल्या जगात आता लोकांचे प्राणही वाचणार आहेत. अरे हो, खरं तुम्ही बरोबर ऐकलात. हेल्थकेअरच्या जगात आता मेटावर्स सुद्धा पुढाकार घेत आहे. मेटावर्सने मेडिकल क्षेत्रातील सर्वात कठीण व अविश्वसनीय गोष्टीही फारच सहज आणि शक्य केली आहे. आज मी तुम्हा सर्वांना हे सांगणार आहे की मेटावर्सने कशा प्रकारे हेल्थकेअर इंडस्ट्रीला संपूर्णपणे बदललं आहे, कशा प्रकारे आपले सर्जन्स, मेडिकल प्रोफेशनल्स VR, AR, AI, IoT किंवा व्हर्च्युअल रियालिटीला स्वीकारून कठीणपेक्षा कठीण सर्जरीजना सुद्धा अगदी इझिली सॉल्व्ह करणार आहेत. आता जास्त वेळ वाया न घालवता वळूयात मेटावर्स मेडिकल सर्जरीच्या सर्वात मोठ्या एक्झाम्पलकडे. USच नाही तर संपूर्ण जगात वन ऑफ द बेस्ट मेडिकल इन्स्टिट्यूशन बॅल्टिमोर मेरीलँड बेस्ड जॉन्स हॉपकिन्स हॉस्पिटल, ज्याने बघता बघता मेडिकलच्या जगातच नाही तर मेटावर्सच्या दुनियेत सुद्धा वर्ल्ड फर्स्ट ऑगमेंटेड रियालिटी एडेड सर्जरीला परफॉर्म करून हिस्ट्री क्रिएट केली आहे. डॉक्टरला देवाचं रूप म्हटलं जातं आणि आपल्या या डॉक्टर रूपी देवाला जर का योग्य वेळी परिपूर्ण असे शस्त्र मिळाले तर काम फते. असंच काहीतरी घडलं जेव्हा जॉन्स हॉपकिन्स न्यूरोलॉजी स्पायनल फ्युजन लॅबोरेटरीचे डिरेक्टर डॉक्टर टिमोथी विथम ने आपल्या टीम सोबत इन्स्टिट्यूशनचे सर्वात प्रथम ऑगमेंटेड रियालिटी सर्जरीजला एखाद्या जिवंत पेशंटवर परफॉर्म केलं. सर्वात प्रथम प्रोसिजर्सच्या वेळेस फिजिशियन्सने पेशंटची जुनी वेदनादायक पाठदुखी कमी करण्यासाठी पेशंटच्या स्पाईनमध्ये 1 किंवा 2 नव्हे तर 6 स्क्रू घातले. दुसऱ्या सर्जरीबद्दल बोलायचे झाले तर डॉक्टरांनी पेशंटच्या मणक्यातील कॅन्सरची गाठ म्हणजेच कॉर्डोमा काढून टाकण्यासाठी मेटावर्सचा वापर केला होता. डॉक्टर विताम यांच्या मते ऑपरेशन दरम्यान ऑगमेंटेड रियालिटी वापरणे म्हणजे डोळ्यांसमोर GPS नॅव्हिगेटर असण्यासारखे आहे. याच्या मदतीनं डॉक्टरांना रुग्णांचे CT स्कॅन्स दुसऱ्या स्क्रीनवर पाहण्याची गरज नसते. या सर्व गोष्टी टेक्नॉलॉजीच्या संबंधित आहेत. मग भारत तरी यात का बरं मागे राहील? मी तुम्हाला सांगते की भारताने मेटावर्स हेल्थकेअरला देखील अगदी मनापासून स्वीकारलं आहे. हेल्थकेअर क्षेत्रातील प्रमुख अपोलो हॉस्पिटल ग्रुपने टेक्नॉलॉजीचा अवलंब करण्यासाठी कॅलिफोर्निया बेस्ड डीप टेक स्टार्टअप 8 चिली INC सोबत आता हात मिळवणी सुद्धा केली आहे. अशा परिस्थितीत याच्या मदतीने रुग्णालयाला व्हर्च्युअल रियालिटीच्या माध्यमातून रुग्णांचे प्री आणि पोस्ट ऑपरेशन काउन्सिलिंगचे समुपदेशन करता येणार आहे. अपोलो हॉस्पिटल ग्रुप नंतर भारतातील प्रमुख हॉस्पिटल किंवा मेडिकल इन्स्टिट्यूशन म्हणजे ऑल इंडिया इन्स्टिट्यूट ऑफ मेडिकल सायन्सने देखील मेटावर्स हेल्थकेअर कॉन्सेप्टला स्वीकारला आहे. एम्स न्यू दिल्लीने इमर्सिव्ह टच या लीडिंग मेडिकल टेक्नॉलॉजी कंपनीकडून नवीन डिजिटल सर्जरी टेक्नॉलॉजीला लागू केले आहे, जे डिजिटल सर्जरी मेटावर्स बनवते. याचा मागचं मिशन हे आहे की सर्जन्सना VR प्लॅटफॉर्मवर रिहर्सल करण्याची परवानगी देणे, की जेणेकरून ऑपरेटिंग रूममध्ये जाण्या अगोदर ते 3D मधून प्रत्येक रुग्णांची अनोखी अशी शारीरिक रचना समजून घेऊ शकतात. इमर्सिव्ह टचचे मिशन रिहर्सल हे VR प्लॅटफॉर्म 2D डेटाला पेशंटच्या डिजिटल ट्विनमध्ये रूपांतरित करणे आहेत. इतकेच नाही तर ते सर्जन्सना अनऑब्स्ट्रक्टेड व्ह्यू सुद्धा देतात, की जेणेकरून ते फारच सहजपणे सर्जरी करू शकतात, ज्याला आपण अगदी कुठेही न पाहिलेले किंवा ऐकलेले असेल. एम्स न्यू दिल्ली येथे उपस्थित असलेल्या सर्जन्सने कार्डिओफेगस ट्विन्स मुलांना वेगळे करण्यासाठी इमर्सिव्ह टचचा VR प्लॅटफॉर्मचा वापर करून अत्यंत कठीण किंवा दुर्मिळ शस्त्रक्रिया करण्याची तयारी केली होती. कार्डिओफेगस म्हणजे जी जुळी मुलं ही जन्मापासून एकमेकांशी जुडलेले असतात, अशा परिस्थितीत ही जगातील सर्वात कठीण शस्त्रक्रिया मानली जाते.
ज्यामध्ये ऑपरेशन करणे भरपूर कठीण होऊन जाते. परंतु इमर्सिव्ह टच VR प्लॅटफॉर्मच्या मदतीने जटिल शस्त्रक्रिया यशस्वी करण्यासाठी एम्स न्यू दिल्ली येथील डॉक्टर दीपक गुप्ता यांच्या नेतृत्वाखाली 40 डॉक्टरांच्या ग्रुपचे नेतृत्व करण्यात आले. मित्रांनो, विशेष म्हणजे ही शस्त्रक्रिया पूर्ण यशस्वी झाली आणि आता हे दोन्ही मुलं एकत्र मोठी होत आहेत. मेटावर्स संबंधित टेक्नॉलॉजी आता कोणासाठीही रिमोट असिस्टन्सच्या सुविधेसह आली आहे. म्हणजेच डॉक्टर मुंबईत आहेत, पण कानपूरमधील डॉक्टरांच्या टीमने केलेल्या शस्त्रक्रिया पाहून डिजिटल पद्धतीने मार्गदर्शन सुद्धा करू शकतात. विशेष म्हणजे ही टेक्नॉलॉजी मायक्रोसॉफ्टने बनवली आहे, ज्याचे नाव मेटावर्स होलोलेन्स 2 आहेत. आता आपल्याला हे देखील कबूल करावं लागेल की मेटावर्स हे जग केवळ मनोरंजक किंवा रोमांचक नाही, तर आरोग्यासाठीही फारच महत्त्वपूर्ण आहे. आता तर मेटावर्स हेल्थकेअर रेव्होल्यूशनची सुरुवात झाली आहे. अजून पुढे यामध्ये बरीच टेक्नॉलॉजी येणार आहे. मित्रांनो, यात काही शंका नाही आहे की या संदर्भात अनेक आव्हाने देखील आहेत, ज्यांचे निराकरण मेटावर्स हेल्थकेअर कंपनी किंवा डॉक्टरांनी करणे गरजेचे आहे. अशाच प्रकारचे मेटावर्स संबंधित अपडेट्स घेऊन मी वैभवी सावंत पुन्हा तुमच्या भेटीला येणार आहे. तोपर्यंत पाहत रहा क्रिप्टो टीव्ही. हाय गाईज, मी वैभवी सावंत स्वागत करते तुमचं क्रिप्टो टीव्ही मध्ये. मागच्या भागात आपण पाहिलेलं नेमकं ब्लॉकचेन टेक्नॉलॉजी म्हणजे काय. आज आपण पाहणार आहोत ब्लॉकचेन टेक्नॉलॉजीला इन्व्हेंट कोणी केलं. ब्लॉकचेन टेक्नॉलॉजीला सातोशी नाकामोटो यांनी सन 2009 मध्ये इन्व्हेंट केलं, कारण ते क्रिप्टोकरन्सी बिटकॉइन मध्ये पब्लिक ट्रान्झॅक्शन लेजर हे त्यांच्या हिशोबाने करू शकतील. तसेच हे सर्व करण्याच्या पाठी सातोशी नाकामोटो यांचे मूळ उद्देश होता की ते एक डिसेंट्रलाइज्ड बिटकॉइन लेजर द ब्लॉकचेन बनवणार होते, की ज्याद्वारे लोकांना त्यांच्या पैशांचे कंट्रोल करण्याची क्षमता देते, की ज्यामुळे कोणीही थर्ड पार्टी अथवा कोणतेही सरकार सुद्धा या पैशांना ऍक्सेस किंवा मॉनिटर करू शकणार नाहीत. सातोशी जे बिटकॉइनचे क्रिएटर आहेत ते अचानक 2011 ला गायब झाले आणि त्यांनी आपल्या पाठी बिटकॉइनच्या युजर्ससाठी अपडेट आणि इम्प्रूव्ह करण्यासाठी ओपन सोर्स सॉफ्टवेअर सोडून गेले. अनेकांना असं वाटतं आहे की सातोशी नाकामोटो नावाचा असा कोणताच व्यक्ती नाही आहे, हे तर फक्त काल्पनिक कॅरेक्टर आहे आणि याविषयी कोणाकडेही खरी माहिती अद्याप उपलब्ध नाही आहे. बिटकॉइनसाठी ब्लॉकचेनची इन्व्हेन्शन एक अशी प्रथम डिजिटल करन्सी आहे की जी ट्रस्टेड सेंट्रल ऑथॉरिटी किंवा सेंट्रल सर्व्हर्सच्या मदतीशिवाय डबल स्पेंडिंग प्रॉब्लेमला सॉल्व्ह करू शकते. यासाठी ही ब्लॉकचेन टेक्नॉलॉजी दुसऱ्या अनेक ऍप्लिकेशनसाठी इन्स्पिरेशन सुद्धा राहिली आहे. आपल्याला ब्लॉकचेन विषयी का माहिती असली पाहिजे, याचे 3 मुख्य कारण आहेत की का आपल्याला ब्लॉकचेन विषयी जाणून घेतले पाहिजे. नंबर 1, ब्लॉकचेन टेक्नॉलॉजीला पब्लिकली एक्झिस्ट करण्याची काहीही गरज नाही आहे. हे प्रायव्हेटली सुद्धा एक्झिस्ट करता येतं, जेथे नोड्स केवळ कोणत्या एका प्रायव्हेट नेटवर्कवर सिम्पली पॉइंट्स असतात आणि ब्लॉकचेन एक डिस्ट्रीब्युटेड लेजर नुसार काम करते. फायनान्शियल इन्स्टिट्यूशन हे खूपच प्रेशरमध्ये आहे, कारण त्यांना रेग्युलेटरी कंप्लायन्स डेमॉन्स्ट्रेट करावं लागत आहे आणि त्यामुळे खूप सारे इन्स्टिट्यूशन ब्लॉकचेनला इम्प्लिमेंटेशन करत आहेत. सिक्युअर सोल्युशन ज्याप्रमाणे कंप्लायन्स कॉस्टला काम करण्यासाठी ब्लॉकचेन एक खूप मोठा आणि महत्त्वपूर्ण बिल्डिंग ब्लॉक बनवू शकते. नंबर 2,
ब्लॉकचेन टेक्नॉलॉजीची ओळख फायनान्सपेक्षाही जास्त आहे. याला कोणत्याही मल्टी स्टेप ट्रान्झॅक्शन जेथे ट्रेसेबिलिटी आणि विजिबिलिटीची गरज आहे तेथे ह्याला अप्लाय करता येऊ शकतं. सप्लाय चेन एक असं नोटेबल केस आहे जेथे ब्लॉकचेनचा वापर लेव्हरेजला मॅनेज करण्यासाठी आणि साइन कॉन्ट्रॅक्ट्स आणि प्रोडक्ट प्रोव्हिनन्सला ऑडिट करण्यासाठी करता येऊ शकतं. यासोबतच याचा वापर वोटेशन प्लॅटफॉर्म मध्ये सुद्धा टायटल्स आणि डीड मॅनेजमेंट साठी करता येऊ शकतं. जसजसे डिजिटल आणि फिजिकल वर्ल्ड्स कॉन्व्हर्ज होत आहेत तसतसे ब्लॉकचेनची प्रॅक्टिकल ऍप्लिकेशन पण हळूहळू वाढत आहे. नंबर 3, ब्लॉकचेनची एक्सपोनेन्शियल आणि डिस्क्रिप्टिव्ह ग्रोथ तेव्हा येऊ शकते जेव्हा पब्लिक आणि प्रायव्हेट ब्लॉकचेन्स एक साथ कॉन्व्हर्ज करेल. एक सिक्युअर, ऑडिटेबल आणि व्हर्च्युअल वेव्ह मध्ये येण्यासाठी एक असा इकोसिस्टम मध्ये जेथे फर्म्स, कस्टमर्स आणि सप्लायर्स एकत्र मिळून कोलॅबरेट करू शकतात. तर आपण पाहणार आहोत ब्लॉकचेन हे किती सुरक्षित आहे. तसं पाहिलं तर इंटरनेटवर कोणतीही गोष्ट ही सुरक्षित नाही आहे. पण जर का आपण ब्लॉकचेन टेक्नॉलॉजी विषयी म्हटलं तर इतर टेक्नॉलॉजीच्या तुलनेने खूप जास्त पटीनेही अनहॅकेबल आहे. ब्लॉकचेन मध्ये कोणताही ट्रान्झॅक्शन करण्यासाठी संपूर्ण नेटवर्कचा सर्व नोड्सला ऍग्री करावं लागेल. तेव्हा कुठेतरी जाऊन ट्रान्झॅक्शन व्हॅलिड होईल. येथे कोणतेही सिंगल एंटिटी हे सांगू शकत नाही की ट्रान्झॅक्शन झाले आहे की नाही. याला हॅक करण्यासाठी आपल्याला बँक सारखं फक्त एक सिस्टीमला हॅक न करता संपूर्ण नेटवर्क मधील सिस्टीम्सला हॅक करावं लागेल. म्हणून या टेक्नॉलॉजी मध्ये हॅकिंग करणं एवढं सोपं नाही. जवळजवळ सर्व ब्लॉकचेनची कॉम्प्युटिंग रिसोर्सेस खूप जबरदस्त आहेत कारण हे ते एक संगणक नसून नेटवर्क मध्ये अनेक संगणक जोडले गेलेले आहेत. 1990 मध्ये जेव्हा इंटरनेट टेक्नॉलॉजी आपला नेटिव्ह स्टेज मध्ये होते, ईमेल तेव्हा एक सर्वात मोठं आणि प्रथम ऍप्लिकेशन होतं. पण नंतर नवीन ऍप्लिकेशन ज्याप्रमाणे वेब ब्राउझर्स आले, वेबसाइट्स तेव्हा खूप पॉप्युलर झाले. लोक त्यानंतर चॅट सॉफ्टवेअर जसे स्काइपचा खूप जास्त प्रमाणात वापर करत होते. जर आपण आता बद्दल विचार केला तर आपण आपल्या मोबाईलमध्ये देखील बरेच ऍप्लिकेशन इंटरनेटचा वापर करताना आपल्याला पाहायला मिळत आहे. जेव्हा ब्लॉकचेन टेक्नॉलॉजी नवीन आली, बिटकॉइन सुद्धा ईमेल सारखं सर्वात प्रथम मोठं मेजर ऍप्लिकेशन होतं जे या टेक्नॉलॉजीला वापर करत होतं. दुसऱ्या क्रिप्टोकरन्सीजने या ट्रेंडला नंतर फॉलो केलं. आता ब्लॉकचेन टेक्नॉलॉजीला सुद्धा सिक्युरिटी, ऑनलाईन वोटिंग इत्यादी सारखं बरेच ऍप्लिकेशन मध्ये वापर केले जातात. तर मित्रांनो, पुन्हा भेटूया क्रिप्टो विषयी नवीन स्टोरीज घेऊन. तोपर्यंत पाहत रहा क्रिप्टो टीव्ही. मी वैभवी सावंत, आपली क्रिप्टो फ्रेंड. तुर्तास येथेच थांबते. धन्यवाद. Find out how disruptive blockchain technology is reshaping the world. We will keep you connected to the evolving world of NFT. For accurate and latest updates of cryptocurrency markets and global regulations. Metaverse and Web3 3.0 TV covers the latest crypto crimes. keeps you updated about the global crypto events and exhibitions. नमस्कार, मैं संदीप कसालकर। क्रिप्टो की इस क्रेजी दुनिया में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा एपिसोड है मिलेनियल्स पे चढ़ा क्रिप्टो का क्रेज। तो दोस्तों, हर सेंचुरी के दौरान टेक्नोलॉजी में बड़ा बदलाव होते हुए देखा गया है। जैसे कि 20वीं सेंचुरी में इंटरनेट एक बहुत बड़ा इनोवेशन था जिसने पूरी जनरेशन को बदल कर रख दिया। ठीक उसी तरह 21st सेंचुरी में ब्लॉकचेन पर बेस्ड क्रिप्टो करेंसी से आई बदलाव की लहर यंगस्टर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है। इस तरह से एक रिपोर्ट में पाया गया कि इंडिया की यंग जनरेशन सबसे ज्यादा क्रिप्टो की माला जबी नहीं रही है, बल्कि उसे अपनाकर मुनाफा भी कमा रही है। यह बात सच है कि क्रिप्टो करेंसी प्लेटफॉर्म कई तरह के रिस्क और
रेगुलेटरी अनसर्टेनिटीज से भरे हुए हैं। लेकिन इसका अट्रैक्शन ऐसा है कि इन सब के बावजूद लोग चाहकर भी इसे अपनी नजरें नहीं हटा पा रहे हैं। महज बातों में नहीं, बल्कि चलिए इसके सबसे बड़े एग्जांपल्स की तरह नजर घुमाते हैं। जहां इंडिया के सबसे बड़े क्रिप्टो एक्सचेंज में से एक को 1 करोड़ क्लाइंट्स के अकाउंट तक पहुंचने में 10 साल से भी ज्यादा का समय लग जाता था, वही वजीरेक्स और कॉइनडिसेक्स ने देखते ही देखते लगभग 4 साल से भी अधिक 1 करोड़ क्लाइंट्स का आंकड़ा अपने नाम कर लिया है। जबकि कॉइनसेज कुबेर ने दावा किया कि उसने सिर्फ 1 साल में भी 1 करोड़ के क्लाइंट्स को खुद से जोड़ लिया। इंडिया के बाद अगर बात इंटरनेशनल लेवल पर की जाती है तो चीजें यहां भी बेहद चौंकाने वाली है। फॉरेन में 45% यंग जनरेशन यानी 18 to 35 वर्ष के लोग क्रिप्टो को सिर्फ इन्वेस्टमेंट की नहीं बल्कि पेमेंट के रूप में भी इस्तेमाल करना पसंद से लेकर उन मर्चेंट को भी ट्रस्ट करते हैं जिनके द्वारा क्रिप्टो को ऑफर किया जाता है। वहीं दूसरी तरफ सर्वे में शामिल 18 से 35 वर्ष के लगभग 40% लोगों का कहना है कि आने वाले साल में गुड्स एंड सर्विसेज के भुगतान के लिए क्रिप्टो का उपयोग करने का इरादा रखते हैं। इसे पर्सपेक्टिव में रखते हुए 42% यूरोपियन कंज्यूमर्स ने कहा कि उन्होंने 2020 में एप्पल पे या गूगल पे जैसी डिजिटल वॉलेट का इस्तेमाल करके फियाट में पेमेंट किया था, जबकि 21% यूरोपियन कंज्यूमर्स ने बताया कि उन्होंने बाय नाउ पे लेटर ऑप्शन को भी अपनाया था। अब 18 से 35 वर्ष के लड़के और लड़कियों के बीच कौन कितने परसेंट आने वाले 12 महीनों में किस तरह से क्रिप्टो का इस्तेमाल करने की प्लानिंग कर रहा है, चलिए आपको बताते हैं। जहां 24% लड़के हमेशा क्रिप्टो में पेमेंट करना चाहते हैं, वहीं सिर्फ 11% लड़कियों ने अपनी हामी भरी है। दूसरी तरफ जहां 33% लड़के काम के मामले में क्रिप्टो का ऑप्शन चुनना पसंद करेंगे, वहीं 28% लड़कियों ने भी इसे चुना है। हालांकि 43% लड़के और 61% लड़कियां इसमें इंटरेस्ट नहीं रखते हैं। इनके अलावा बात करें इन्वेस्टोपीडिया द्वारा हाल ही में किए गए सर्वे की, तो अमेरिका में मौजूद 28% मिलियनर्स का कहना है कि वो क्रिप्टो को अपने रिटायरमेंट को सपोर्ट करने के रूप में देख रहे हैं। यह आंकड़ा उन लोगों की तुलना में बहुत ज्यादा है जिन्होंने कहा था कि वो बचत 25% और स्टॉक इन्वेस्टमेंट 27% का इस्तेमाल करेंगे। पहले जहां लोग क्रिप्टो के नाम से डरा करते थे, कई इसे सट्टे तक का नाम दिया करते थे, उनका अब पिछले 2 साल में क्रिप्टो की दुनिया को देखने का अपना नजरिया बदल चुका है, जिसकी वजह तेजी से आई इस दुनिया में आया हुआ उछाल है। खास करके हमारी न्यू जनरेशन बड़ी संख्या में क्रिप्टो पर अपना भरोसा जमा रहा है, जबकि पुराने जनरेशन से कई इसे रिटायरमेंट के लिए सपोर्ट के रूप में देख रहे हैं। लेकिन एक बात याद रखें कि आसमान में इतना न उड़ते उड़ते आगे निकल जाए कि अपना वापस लौटना मुश्किल हो जाए। दूसरी तरफ जो क्रिप्टो को रिटायरमेंट के रूप में देख रहे हैं, उन्हें भी सावधानी से अपना फैसला लेना चाहिए। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि क्रिप्टो की इस तेजी से आगे बदल रही दुनिया से आपको दूर रहना है, बल्कि थोड़ा थोड़ा ही सही लेकिन टेक्नोलॉजी की इस रेस में बने रहना है। तो आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही क्रिप्टो से जुड़ी दिलचस्प जानकारी को लेकर मैं संदीप कसालकर फिर आपसे मिलूंगा। तब तक के लिए देखते रहिए क्रिप्टो टीवी, आपका क्रिप्टो पार्टनर। Find out how disruptive blockchain technology is reshaping the world. We will keep you connected to the evolving world of NFT. For accurate and latest updates of cryptocurrency markets and global regulations. Metaverse and Web3 3.0 TV covers the latest crypto crimes. keeps you updated about the global crypto events and exhibitions. The cryptocurrency world is jam-packed with fascinating, strange, and spicy stories. One of the most intriguing, touching, and even mysterious narratives in all of cryptocurrency history is that of the Ethereum blockchain origins. Ethereum was born with the goal of being a more advanced, open source, and functional version of the Bitcoin, mainly through the use of these amazing, still developing smart contracts. Now, the currency that makes up the majority of the Ethereum network is ETH. The world's second biggest blockchain launched its long-awaited merge. Come on. Two. Come on now. Hey. Building one chain. Moving from the proof of work to proof of stake. Big change. The algorithm consensus changed and drastically reduced
Ethereum's energy usage, making it more environmental friendly than Bitcoin. Now, to understand the importance of the merge, it's important to understand why people use blockchains. One of the most important ideals of the technology is it has no central authority that can control it, thanks to a process called proof of work, in which the blockchain is operated and safeguarded by miners who approve new and valid transactions by solving complex mathematics puzzles, which makes it really extremely hard for hackers or tamperers to game the system. Now, the energy required to solve these problems is enormous, and the miners are rewarded in the blockchain's currency for the effort. Now, studies estimate that Bitcoin mining uses more power globally than most other countries. Massive. The enormous energy use of proof of work, which again is built into the design, has also caused widespread criticism from environmental groups, especially countries who are trying to reduce their emissions in the face of climate change. Now, proof of work also has design issues in terms of security and scalability. Some developers do argue. So while Ethereum's first developers started to build the network on the proof of work in 2014, they were already toying with the idea of eventually switching over to a new, untested system called proof of stake. Well, a merge is a very, I'll put it in simple words for our viewers. Previously, Bitcoin and Ethereum were using a consensus mechanism. What is the consensus mechanism? How to solve a problem. All agree on that, solve the problem, put it into the block, right? First, they were using proof of work, which was a little complicated and very energy consuming. Now that was good when Bitcoin and Ethereum started because there are not so many transactions. Now it became an issue because it's actually taking a lot of consumption, electricity consumption, computing power, too much of it. Why? Because so many people at the same time trying to solve a problem so that they get the rewards for creating the blocks. Now that was before. With the merge, now not Bitcoin, but Ethereum has now moved beautifully to a place where they say, listen guys, we don't need all these. We have what is known as proof of stake. They changed that. Proof of stake means you stake your rewards, your coins, the tokens that you have, and that's it. The people who stake more have a better opportunity of actually creating the solutions, creating blocks, and thereby solving the problem of multiple people. Many people now have become a select few. So from here, we've come right here. And that has actually solved a major problem, computing power and electricity usage. And that, I say, is a big win for the environment. So if you look at Ethereum blockchain, it's always been in proof of work. So proof of work is what? It's a consensus mechanism where a lot of miners actually compete with each other to mine a block. Now what happens is that suppose 100 miners are competing with each other. So that means 100 miners are consuming electricity at the same time. So but that is not so energy efficient, that consumes a lot of electricity. There has been so many concerns regarding this. People have raised concerns regarding carbon footprint. Now we are moving to proof of stake. Proof of stake is what? Just one person who is compiling the block, he will be consuming the electricity. So that is what we are moving. That is what the merge is happening. Merge means what? Merging of two chains. Merging of beacon chain to the mainnet, Ethereum mainnet, which is there. So that is the merge which is happening with Ethereum, and we are moving from proof of work to proof of stake. Right. The beacon chain is the engine on which Ethereum works basically. It is the POS, the proof of stake. However, the transformation of the main ledger to this engine has to be multi-step, well calibrated to the tons of value locked onto the Ethereum network at the moment. Now, the beacon chain first implemented staking in the Ethereum network. A deposit contract was deployed in October 2020, and thereafter, in December 2020, the beacon chain was launched parallel to the main chain, therefore using a common state of the mainnet ledger. But there was a problem of onboarding the existing nodes to the new system. The incentivization of the miners to validators would change things significantly, and the community had to adapt to this new system, or this would have resulted in a split. So basically there were 4 upgrades which majorly happened in Ethereum network.
First was the bundling upgrade. So what happened in the bundling upgrade is that people started moving towards proof of stake. And if you see, this is the first upgrade where the gas impact happened. Because if you see, the gas is a bigger concern for Ethereum network. Because gas fees were really high, it was going beyond $100 for a single transaction. So this is the first time where the gas was impacted, and that is where the excitement got created. Now second upgrade was basically London hard fork, where people were encouraged to move to proof of stake rather than proof of work. So this is the time miners were becoming validators. I mean, people who were earlier just mining, using their mining devices, they were encouraged to become validators. So like they used to stake, they started staking ethers instead of just mining a node. So that is where the London hard fork came in. Now the third upgrade. Third is basically the Altair upgrade. Altair upgrade basically started penalizing people who are not moving to proof of stake. Who were already there in proof of work, they started penalizing these people because they want to penalize people who are not moving, who are not adapting to the new chain. They also want to penalize at the same time people who are malicious, who are doing some malicious work in the network. So these were two kind of people who got penalized. First is that people who are not adapting to the new chain, who are not moving to proof of stake, and other is basically the people who are doing malicious actions in the new chain. Now the fourth is the Arrow Glacier upgrade. So Arrow Glacier upgrade, what happened is that people we have delayed this bomb which was about to happen, traffic bomb. So this was delayed for some time. See, by involving the network's approach to consensus, the merge is going to reduce Ethereum's energy consumption and requirements by 99.95%, and that is significant, ensuring that the network can now sustainably support the next generation of Web3 creators and developers. Web3 is the next big thing, guys. That's really going to be sacrosanct for them. Second, the Ethereum's updated crypto economic model reduces Ether issuance and provides stronger security guarantees for users and DeFi protocols. A third benefit is that Ethereum's upcoming merge would significantly impact the way DeFi protocols operate. There's going to be a shake there, atop crypto's most popular decentralized finance chain. Now, according to a recent DappRadar report, this was found. The study showed that delays that could arise during the transition to a proof-of-stake consensus mechanism, also known as the merge, and the impact on the institutions will make fundamental changes to the Ethereum network, like improving sustainability and security, setting it up for further scalability, and making an attractive real yield on staking. Now, all these changes are going to make Ethereum more attractive to institutional investors. A look at Ethereum's roadmap makes it clear that the community is building the network and its technology for the long term. The merge is a step in the right direction. With the merge on the horizon, we are exploring factors that ensure Ethereum's long-term growth. So we see the Ethereum merge is a huge event in the Web3 universe. It will have far-reaching effects on the rest of the crypto industry. We are here to witness a historic moment unveil itself in front of our eyes, the merge.
Hello and welcome to all the viewers of 3.0 TV. This is Manoj Dara. And I'm Ruchi Sharma. Cryptocurrencies fell in Asian evening trade on Friday in the aftermath of Fed Reserve's rate move amid concerns over economic outlook and ability of the blockchain networks to attract more projects into its fold in the current situation. Bitcoin slipped below $19,000. US futures extended a drop on Friday, pointing to lower opening of stocks for the fourth straight day, as investors fled to safe haven assets such as bonds and dollars. The US stocks are set to end down for the fifth week in 6 out of 6 weeks. The Fed on Wednesday raised rates by another 75 basis points and signaled that there are more hikes to come going forward. The Fed chairman Jerome Powell, while speaking to reporters, indicated more pain for the economy as the central bank sought to tame inflation. Dollar index, which measures the strength of the greenback against its basket of currencies, advanced further, weighing on cryptocurrencies. Bitcoin was recently seen trading at around $18,890, down 1.7% in the past 24 hours. Ethereum, the second biggest crypto, was trading around $1,300, down by 0.8%. All major altcoins mostly traded lower. बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज क्रैकन की मार्केट इंटरमीडिएट के रूप में यूएस सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन के साथ रजिस्टर करने और टोकन को हटाने की योजना नहीं है। यूएस स्टॉक मार्केट रेगुलेटर ने सिक्योरिटीज के रूप में लेबल किया है, जो आने वाले चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर डेव रिपली ने कंपनी के कल्चर कोर्स पर अपने रहने का वादा किया है। क्रैकन ने पहले यूक्रेन पर आक्रमण के बाद रशियन यूजर के डिजिटल वॉलेट एड्रेसेस को ब्लॉक करने की रिक्वेस्ट का पालन करने से इनकार कर दिया था। क्रैकन ने बुधवार को घोषणा की है कि इसके ऑफन कंट्रोवर्शियल को-फाउंडर जेसी पावल पद छोड़ देंगे और क्रैकन के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर रिपली सीईओ की भूमिका संभालेंगे, जब तक फर्म एक नए सीओओ को हायर करेगी। Preferred equity holder in the failed cryptocurrency lender Celsius Network have filed a motion in the bankruptcy court to appoint a panel representing Series A, Series B shareholders and to place them at the front of queue when it comes to the sale of custodian from GK8 and the Celsius mining operations. The shareholders are worried that the bankruptcy process is overly focused on retail customers and they would be left out. DeFi टेक्नोलॉजीज की एक सब्सिडरी वैलर फ्रैंकफर्ट स्टॉक एक्सचेंज में अपने न्यू कार्बन न्यूट्रल बिटकॉइन एक्सचेंज ट्रेडेड प्रोडक्ट की शुरुआत करेगी। ETP की ट्रेडिंग 23 सितंबर से शुरू हुई। कंपनी अपने ETP को 1.49% के मैनेजमेंट फी के साथ बिटकॉइन के सस्टेनेबल और क्लाइमेट फ्रेंडली एक्सपोजर के रूप में देखती है। ETP की संरचना के लिए वैलर ने पैच के साथ भागीदारी की है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो क्लाइमेट एक्शन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रदान करता है और पहले एंडरसन हॉरोविट्ज और नोटेबल इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के साथ काम कर चुका है। Hedin, a metaverse infrastructure development firm, had raised $30 million in Series A funding in a round led by Molten Ventures and including Epic Games, the developer of the online video game. इतिहास दुरुस्त करण्यासाठी